हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस अबाउट द साइन ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट। कि हमारे पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसी पॉइंट पे पॉजिटिव है तो उसका मीनिंग क्या होता है, अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट नेगेटिव है तो उसका मीनिंग क्या होता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द increasing. If the function is increasing, it means at any point, it means अगर लिटिल बिट हम थोड़ा सा राइट में मूव करें, when x is increasing, then the value of the function should be increasing. It means if you know that if this point x1 is lesser than x2 and this x2 is more than x1, then it means the value of the function x1 should be lesser than a value of x2. इस पॉइंट इसलिए हम बोल इस फंक्शन जो है इसे हम इंक्रीजिंग बोलते हैं इफ दिस x1 is nearby x2 is nearby x1. ओके, एट दैट पॉइंट। तो लेट अस सी कि कैसे हम इसे देख पाते हैं। तो हम इसको दोनों तरीके से प्रूव करेंगे कि फंक्शन if derivative is positive, it means function is increasing at that point. If derivative is negative at that point, it function is decreasing at that point. Okay, so let's start with this one. So if I'm just taking a function fx, so I'm just have let this fx be a function such that its value at a point x is equals to c is just c, obviously value of the function at the point c is 0. So when we write, we can just have p plus h. It means in right side. तो अभी इसको हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे for a p in fx, h being any positive and very small. So there are two cases arises. Okay. Okay. So you can see by the graph, if you are writing here, looks like this. If you have some function, looks like increasing. So it means that if you are have a value of the function at point x is equals to c there, and you have little bit in right side, then this is x plus h point, x not c, t plus h point, and the function value if f t plus h, and the value of the function is this fc. So here you can see clearly this f of c plus h will be greater than fc. If one case is this, another case, what will be the another case? If looks like this, it means if this is the point x is equals to c, and we are moving right side, here the value is c plus h. It means value of the function at this point is f of c plus h, and at this point is fc. So here this f of c plus h is lesser than fc, and here f of c plus h is greater than fc. Okay, so there are two conditions will be appear if you are moving right side. So here one case is function is increasing and another case is function is decreasing. Okay, so first case study करते हैं कि when the function is increasing, it means f of c plus h is more than f of c. So what will be happen? So case first is this. Case first, if I'm just taking first case, so f of c plus h is here is more than fc, and we are taking this is h is in a positive number, and but it is very small, so you can have implied f of c plus h
minus of fc will be greater than 0. If we this happens, then if and only if you can implies back. So if you are divide it by h, you divide this by h, so it remains positive. It remains positive, or you can say or like this. It remains positive. And what meaning of this? This is the derivative at the point c. So this is value of derivative at the point c, and it will be positive. As you know that this is h is the positive. So this implies when the function is increasing, this will be this effects uh, has a positive, not effect. You can say f dash. Okay, has positive sign at x is equals to p. Okay, so when the function is increasing, it means the derivative will give the positive value. Okay, at that point. Okay, let's. So this is the case one. This is the case first case, and this is case second. Okay, let's case second, where we are taking the function as decreasing. Okay, so if f of this is p plus h is lesser than f of c, and hence s is positive as well. Okay, so if n equal, so it will be f of c plus h minus fc will be lesser than 0, and again you can divide by h. F of c plus h minus of fc divided by h is less than 0. So from here you will get f dash c is lesser than 0, as this is h is a positive number. So you can say this f dash x has negative value at x is equals to p. Okay, so you can see clearly if function is increasing, its derivative will be positive. If function is decreasing at the point, its derivative value will be negative. So thus we can say, thus if you can say this is f dash c is positive, it's positive at x is equals to c, then f dash fx increases with x at x is equals to c. Okay, if f dash c is negative, then it will be decreases. With if this is f dash c is negative, at x is equals to c, then fx decreases. The effect decreases as x increases. Okay, so this is the साइन कन्वेंशन. तो यू कैन सी कि डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और अगर डेरिवेटिव निगेटिव है तो उस पॉइंट पे फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग हो गया. तो हम लोग फाइंड करते हैं कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग कब है, डिक्रीजिंग कब है, फंक्शन का इंक्रीजिंग इंटरवल क्या है, डिक्रीजिंग इंटरवल क्या है, या थ्रू आउट फंक्शन डोमेन में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. ये सारी चीजें हम इस डेरिवेटिव से देख सकते हैं, है ना. यू कैन एबल टू फाइंड द इंटरवल. ओके,
नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अ थ्योरम, है ना, दैट इज रिजल्ट called Darboux intermediate value theorem for derivative. So I'm just going to write first, state first, and then I will prove that result by using this criteria of derivative by the sign convention, by the sign. Okay, so let's write the theorem first. I'm choosing the color. It will be, I'm taking the, let's choose first black. Okay, so this is a Darboux is intermediate value theorem for derivatives. Derivative. Okay. So this is theorem. So let's state first and then I will prove. Okay. So what are the theorem saying? If a function, fx is differentiable, if a function is differentiable in a closed interval, a comma b, and its values at the end point, and f dash a and f dash b are of opposite sign. What meaning of this? It means at the point A, the function is increasing or decreasing. At the point B is also increasing or decreasing. तो अगर A पे इंक्रीज कर रहा है तो B पे डिक्रीज कर रहा है, B पे डिक्रीज कर रहा है तो A पे इंक्रीज कर रहा है. So this is the they have the opposite sign. Okay. Then there exists at least one point C between A and B such that this is f dash C is equals to 0. Okay, so if there exists at least one point C between A and B such that derivative at that point is equals to 3. Okay, so then definitely we will able to find a point C. Okay, so if you are anyhow want to graphical representation of this, you can have let's see what meaning of this. It means if I'm saying we have 2 points A, this is your x is equals to A, and we have this point x is equals to, एंड वी आर सेइंग कि हमारे पास फंक्शन एक पे निगेटिव है, एक पे पॉजिटिव है. तो थोड़ी देर के लिए हम देख लेते हैं कि द फंक्शन इज पॉजिटिव एट ए एंड इट इज निगेटिव एट बी. इट मीन्स दैट कि हमारा फंक्शन पॉजिटिव है ए पे, इट मीन्स दिस हैव लुक्स लाइक दिस. सपोज दैट हम ऊपर ही ले लेते हैं. सपोज दैट पॉजिटिव है इस पॉइंट पे, इसका मतलब कुछ फंक्शन इस तरीके से. अब अगर ये ऊपर ही जाता रहेगा तो बी पे भी पॉजिटिव ही होना पड़ेगा. तो इसको अगर नीचे हमें डिक्रीजिंग बनना है तो इसको मुड़ना पड़ेगा. इट विल बी हैव टू बेंड. तो इसको हमारे पास कुछ इस तरीके से बेंड होना पड़ेगा, है ना. सपोज दैट हम कई बार बेंड हो सकते हैं, तो हम एक बार एटलीस्ट इसको बेंड ही होना पड़ेगा डिक्रीज होने के लिए. अगर हम कहने कि ये इस पॉइंट पे डिक्रीजिंग दिखना चाहिए. ठीक. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दिस इज इंक्रीजिंग इन दिस सेल्स
और दिस इज इन डिक्रीजिंग इन दिस। ओके, यहाँ पर इंक्रीजिंग इन दिस। तो एक तो ये है। बट अगर हमें ए पे पॉजिटिव है, ए पे इंक्रीज कर रहा है और बी पे हम डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब साइन डिफरेंट है, तो इट मीन दैट इट विल हैव टू बेंड। उसको बेंड होना ही पड़ेगा। और जो इसका बेंडिंग पॉइंट होगा, ये यहाँ पर हमारा ये जो पॉइंट होगा, यहाँ पर जो स्लोप होगा टेंजेंट का, बिकॉज यू नो दैट कि एफ डैश सी विल बी इक्वल टू जीरो, स्लोप विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो स्लोप इसका क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर एक पॉइंट हमको सी जरूर मिल जाएगा। देर देर विल बी मोर देन वन पॉइंट। अगर हम कुछ इस तरीके से देख लेते हैं, इफ यू आर राइटिंग लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, ये ठीक। तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास बेंडिंग पॉइंट्स हैं, बट एक पॉइंट को मिलना ही पड़े। ठीक है, तो दिस द डार्बॉक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम इज सेइंग कि अगर हमारे पास जो इंड पॉइंट्स हैं उस पे डेरिवेटिव्स डिफरेंट साइन से, मतलब एक पॉइंट पे इंक्रीजिंग है, एक पे हम ये नहीं कह रहे कि ए पे ही इंक्रीजिंग है, ए पे डिक्रीजिंग भी हो सकता है, बट अभी इट विल बी लुक्स लाइक दिस। तो अगर यहाँ पर ये है तो यहाँ पर इसको ऐसे इंक्रीज होना पड़ेगा इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर भी एक वेंडिंग तो आ गई ना हमारे पास, एक मिनिमा या मैक्सिमा तो हमको मिल गया ना। और उस पॉइंट पे हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये डेफिनेटली होगा ही होगा। तो लेट अस राइट द फॉर्मल प्रूफ फॉर दिस थ्योरम। ओके, तो लेट्स स्टार्टिंग प्रूफ ऑफ दिस। पेन चेंज कर लेते हैं। पेन नहीं, पेन की पेन तो यही रहेगा, पेन तो यही रहेगा, बट हमें इंक चेंज करनी पड़ेगी। इंक हम चेंज कर लेते हैं एंड लेट्स राइट द फॉर्मल प्रूफ। ओके, सो लेट अस सपोज, the value of derivative at the point A is positive। हमने इसको पॉजिटिव लेके चला है। ओके, और अनदर पॉइंट पे हमने इसको निगेटिव ले लेते हैं, so नेगेटिव। ओके, तो हमने एक पे पॉजिटिव ले लिया ए पे और बी पे निगेटिव वैल्यू ले लिया। ठीक, then what we have to show, there exists a point C such that is the derivative at that point is equals to 0। Then we have some open intervals, then there are semi open and semi closed intervals we have। So because A की तरफ से, तो we are just writing A is open and this A plus H is I'm taking closed and H is very small, है ना। एंड यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, वी आर राइटिंग B minus H and this is B। So these are very very small intervals, you can say whatever your A comma B जो इंटरवल है वो कितना बड़ा है, लार्ज है, इट्स नॉट अ मैटर। बट दिस इज बिकॉज H आई एम टेकिंग वेरी स्मॉल, तो दिस इज A comma H plus is a and this B minus H will exist here and A plus H will exist here, so this interval will exist, okay, and this is positive such that that so here you can say this is fx will be greater than fa, because we are saying positive, it means its function is increasing in very less interval। I'm not saying it's a big interval, but h is tending to zero। तो हम एक इतना पार्ट पोर्शन ले रहे हैं, बहुत छोटा सा पोर्शन ले रहे हो, इसमें हमारे पास जो एफ एक्स है दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए, है ना। क्यों, क्योंकि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो यू कैन से फॉर एवरी एक्स x belonging to the this interval a comma a plus h, sorry, close one,
क्योंकि इस इंटरवल से कोई भी पॉइंट है उसके लिए एफ एक्स जो निकालेंगे वो एफ ए से बड़ा ही होगा, क्योंकि वो इंक्रीजिंग है। और जब हम इस इंटरवल की बात करेंगे तो एफ एक्स हमारा जो है छोटा ही रहेगा, बिकॉज इट इज निगेटिव, इट मीन यहाँ पर फंक्शन डिक्रीजिंग है। इसका मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू बी से बड़ी होगी अगर हम इस इंटरवल में लेते हैं, क्योंकि इससे पहले जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो बड़ी होनी है, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है। एफ ए की वैल्यू एफ बी की वैल्यू सबसे कम होगी अगर हम इस इंटरवल की बात करें, क्योंकि फंक्शन हमारा यहाँ पर डिक्रीजिंग है, वो निगेटिव दे रहा है। ओके, तो you can write here increasing, और यहाँ पर आप रख सकते हो डिग्री, ताकि आपको समझने में आता नहीं। ओके, तो आइए, so you can have look like this, and this effects will be also greater than fb for every point x is belonging to uh, this is b minus h, comma. Okay, so now since what is the midway value, it doesn't matter, but the इन पॉइंट्स पे हम देखते हैं तो इंक्रीजिंग नेगेटिव दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, इसका मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट है हमारे पास। तो फ्रॉम दैट वी कैन वी रोट दिस। ओके, तो सिंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, is differentiable in this closed interval a comma b, so it will be continuous, so it is continuous as well. Every differentiable function is continuous in the closed interval. Interval a comma b. Okay, so it is अगर हमारे पास कोई फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होता है तो बाउंडेड भी होता है, और वो अपने बाउंड्स को अटेन करता है। हमने एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम पढ़ा है ना, हमने बाउंडेड वैल्यू थ्योरम पढ़ा है, ठीक है। तो इट इज बाउंडेड एंड अटेन इट्स बाउंड, attain its, so if supremum, so I'm just taking the supremum the least upper bound you can see of fx is just equal to m. It means कि वहां पर कोई ना कोई पॉइंट होगा कि in this interval a comma b such that this fc is just equal to capital M. So then because it the bounds attained, okay, so then there exists uh, point c in this interval a comma b such that you can say such that this is fc is just equal to m. Okay, now the definition of the supremum, we know that if m is a supremum, it means every value of the function is always lesser than this capital M. So now by definition of supremum for every x which is belonging to the closed interval a comma b, this is fx is less or equal to capital M. So this fx is less or equal to fc. Okay, so if fx or fc is, you know that this is the value of the of the supremum, है ना? Okay.
So now what we have to prove? Now to prove that derivative of this point is just equal to g. So and suppose कि ये चीज हमारे पास नॉन जीरो है, सपोज द एफ डैश टी इज नॉट इक्वल टू ठीक. Okay, I'm supposing this derivative at this point is not equal to zero, right? Not equal to zero. सो अगर ये हमारे पास जीरो नहीं है तो या तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा. तो then you can say either f dash t is positive or this is f dash of t is negative. तो अगर हमारे पास पॉजिटिव लेते हैं, सपोज दैट इफ आई एम टेकिंग पॉजिटिव, तो इफ दिस f dash t is positive, so there exists interval we can have c and c plus delta. ओके, where इंटरवल है, इसका मतलब इस इंटरवल के अंदर वो हमारे पास इंक्रीजिंग शो करेगा. ओके, एफ डैश सी इज ग्रेटर देन टू, देयर एग्जिस्ट इंटरवल and being delta is positive number such that this is fx will be greater than this value fc for every x belonging to this interval t comma t plus 2. Okay, or this contradicts first because already we have seen, ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि हमारे फंक्शन की वैल्यू जो है वो लेस और इक्वल टू m. बट अगर हम कह रहे हैं कि एफ डैश टी इंक्रीजिंग है, मतलब एफ डैश टी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि एक हमको इंटरवल मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग होगा. इंक्रीजिंग का मतलब है कि एफ एक्स विल बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू एफ सी. तो हमारे पास ये जो फर्स्ट रिजल्ट है वो कंट्राडिक्ट कर देगा कि हमारे पास फंक्शन जो है वो m इज द सुप्रीमम ऑफ दिस, एंड क्योंकि हमने सुप्रीमम पॉइंट पे ही लिया है कि सुप्रीमम पॉइंट को ही हमने एफ सी बोला है, ठीक है. तो दिस एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ सी फॉर एवरी पॉइंट इन दिस वन. इसका मतलब है हमारे जो फर्स्ट इक्वेशन है वो कंट्राडिक्ट हो जाएगी. तो यू कैन से दिस contradicts one first. ओके, तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव तो नहीं हो सकता. अब निगेटिव के लिए देख लेते हैं, है ना, मतलब एफ डैश की पॉजिटिव तो नहीं ही हो सकता है. ओके, तो अब देखते हैं निगेटिव के लिए. तो if f dash c is negative, okay, then there exists also interval, then there exists interval that is your c minus delta and c. डेल्टा इज ग्रेटर देन सच दैट, और अगर उसकी वैल्यू निगेटिव है तो फिर से वही बात आ जाएगी, एफ एक्स विल बी ग्रेटर देन एफ, बिकॉज इट्स निगेटिव इट मीन डिक्रीजिंग फंक्शन, और डिक्रीजिंग है तो दिस एफ एक्स विल बी अगेन एफ एक्स विल बी ग्रेटर देन एफ सी, है ना, हमने भी पढ़ा था. तो फॉर एवरी if every x belonging to this point t comma delta and ये तो हमारे पास ना कि अगर हमारे पास उस पे निगेटिव वैल्यू आ रही है, हम दिस वन एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ बी, है ना, इसको हमने निगेटिव लिया था, तो निगेटिव आता है तो उसमें भी एफ एक्स हमारे पास बढ़ाएगा, फिर से हमारे पास वो कंट्राडिक्ट करेगा, अगेन हमारे पास रिजल्ट को कंट्राडिक्ट करता है. तो अगेन गेट अ कंट्राडिक्शन.
again we get a contradiction. Okay, तो इसका मतलब है कि the value of the function derivative at the point c, it never be negative, never be positive. So what will be? It will be equal to 0. So therefore you can say therefore f dash c is just equal to 0. But already this f dash c at point is positive and this f dash at point is negative. This is true only. F dash c will be 0 when this c is not equals to a. Is not equals to b and should be belonging to the open interval a का मतलब, क्योंकि a और b पॉइंट पे तो c नेगेटिव पॉजिटिव दे ही रहा है ना। तो इसका मतलब है कि हमारा जो c हम ले रहे हैं जो क्लोज इंटरवल a कमा b से, वो ओपन इंटरवल a कमा b का पॉइंट हो रहा है। So that will be belonging to the open interval a comma b. So but f dash a is positive, this is true only if this c is not equals to a and c is not equals to b, or we can say this is c belonging to a comma open interval. Okay, so that's why the theorem, what the theorem is, it states कि हमारे पास ये है ना, वो क्या बोल रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट वन पॉइंट सी बिटवीन ए एंड such that f dash c will be equal to 0. Okay, तो we proved it कि हमारे पास that definitely a point c that such that the derivative will be equal to 0. Okay, एक corollary है, आइए उसको देख लेते हैं। Okay, so corollary क्या कहते हैं कि if fx is differentiable uh, in the closed interval a comma b, sorry, and this is f dash a is not equals to f dash b, it's the interval a comma b. पता नहीं लिख क्यों नहीं रहा है, क्या बात। this is a comma b. Okay, so not equals to, then f dash x takes all values between f dash a and f dash at least once in this interval a comma okay. So it means what key function is differentiable is the closed interval a comma b, and the endpoints have the different values. Then the f dash x takes all values between the f dash a and f dash at least once in this interval a comma b. So let's prove. So to prove this, suppose this is f dash a is less than f dash b,
So again, we can take a number K and laying between this point between this is f dash A and this is f dash B. You can have f dash A is less than K and f dash. अब हमें देखना है कि कोई भी हमने एक नंबर ले लिया, जस्ट वी कैन टेक एनी नंबर के बिटवीन दिस एफ डैश ए एंड एफ डी, इट मींस इसके बीच का। अब इसके लिए हमको एक पॉइंट ढूंढना है, द इंटरवल इन दिस इंटरवल ए कमा बी such that the derivative f dash c is just equal to k. The value of the derivative at this point c is just equal to k. It means every value between the f dash a and f dash b will be have a derivative value, है ना, fx you can say. तो हम इसके लिए क्या करेंगे, फंक्शन कंसीडर करते हैं। नाउ consider a function capital Fx such that in a such way that Fx is just equal to small fx minus the k. Or f dash x is just equal to, अगर इसका डेरिवेटिव लेते हैं, f dash x is just equal to माइनस दो। ओके, अब हमने जो प्रीवियस थ्योरम है उसका हम यूज करेंगे कि हमारे पास f dash x का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर इन दिस क्लोज इंटरवल a कमा p। तो अब हमें देखना है कि ये किस पे पॉजिटिव हो रहा है, किस पॉइंट पे और निगेटिव हो रहा है। ओके, सो लेट्स सी। तो अगर हम इसका पॉइंट f डैश a निकालते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू f डैश ऑफ a माइनस k इज लेसर देन जीरो। सिंस ऑलरेडी हमने क्या बोला है कि जिस जो f k है दैट इज हैड ग्रेटर वैल्यू टू f डैश a। ठीक, तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। और इसी तरीके से हमारे पास f डैश b पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि एफ डैश बी जो है वो ग्रेट माइनस के विल बी पॉजिटिव, क्योंकि हमारे पास जो एफ डैश बी है वो ग्रेटर वैल्यू रख रहा है, है ना, ऑलरेडी बिकॉज हमने बिटवीन पॉइंट लिया था। तो अब हमारे पास इन पॉइंट्स पे अपोजिट साइन रख रहा है, इसका मतलब एक पॉइंट जरूर है क्लोज इंटरवल ए कमा बी के अंदर सच दैट f dash x f dash c will be equal to 0 by the previous theorem, है ना। तो thus we can say thus a function capital Fx is such that f a is less than 0 and sorry dash and f dash b is greater than 0. So hence by Darboux theorem Darboux's theorem there exists a point C which is belonging to the closed interval a comma b such that this is f dash c is just equal to 0. So by equation so by this equation 1, so by 1 we can say
f dash of c minus k is just equal to 0. It means this is f dash of c is just equal to k. So for every k between f dash a and f dash b, we have a point c in this interval a comma b such that f dash c is just equal to k. Okay, so this proves. So whatever you choose a point, the derivative is just equal to that value. Okay, इसका मतलब जो derivative है dash x will attain each value between f dash a and f dash b if f dash a and f dash b have opposite sign, है ना? If they have opposite sign, okay, then this f dash c will be equal to k. Okay, so this proves the theorem or corollary that is depending on the previous theorem. Okay, तो आई होप कि समझ में आ रहा है और इसकी आप प्रैक्टिस करिए, प्रूफ्स लिखने की प्रैक्टिस करिए, तभी आप कर पाएंगे. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और उसमें हम आपकी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स करेंगे. तो आई विल कवर ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक and some extra method and technology techniques to solve the problems and prove the results. Okay, so keep learning and जो फंडामेंटल्स है बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करिए. जो बच्चे हमारे लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं वो अपना फाउंडेशन, अगर वो हायर मैथमेटिक्स में जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो अपनी फाउंडेशन को बहुत अच्छे से मजबूत करें हमारे लेक्चर्स के साथ. और आपको यहाँ पर इनफ कह सकते हो कि कंटेंट मिलेगा और प्रॉपर वे में मिलेगा. ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमने कुछ चीजें बता दी, कुछ स्किप कर दी. सब कुछ है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट है वो आप पढ़िए, साथ में सारा पढ़िए ताकि आपकी फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स अच्छी बने. ओके, so let's meet in the next lecture. Thank you so much.